Hello everyone. So as you know that I am doing previous year questions from state public service commissions like UPPCS, MPPCS, Rajasthan PCS, Bihar PCS, Uttarakhand PCS, etc. Okay, so in this video we are dealing the Indian polity questions. Okay, and the topic will be articles of Constitution. Okay, so I think a lot of video I've already completed based on this. So if you are new in this channel, you can watch those videos as well before watching this. Okay, so in this we are actually completing last 30 year questions from these examinations. Okay, included UPSC questions as well. Okay, anyway for UPSC I have a separate playlist as well, but based on the topic, whatever question has came, I have included those questions as well. Okay, so if you are aspirant of public service commission, like civil services aspirant, you can get the advantage of this lecture series. Okay, so this is about myself. I did master from IIT Bombay. Okay, so let's see some more question from this topic, which is articles of the Constitution. Okay, so I will suggest you please watch the previous videos as well. Okay, that will really help you. Okay, anyway, we'll see today's questions. Okay, so here you can see like this is the match list, list 1, list 2. You can see article 315, article 280, article 148, article 230, 223A. So here CAG, okay, Finance Commission, Administrative Tribunal, UPSC. Okay, so we have to match with these things. See, CAG, okay, Controller and Auditor General of India. It is given in Article 148. Okay, Finance Commission. If you have watched the previous videos, you can easily answer. It is 280. Okay, everyone know that it's 280. Administrative Tribunal, it is Article 323A. Okay, and UPSC is 315. Fine. So if you match with this, the answer will be A. I hope so. Yeah, answer is A. Okay. So you can see here the same thing is given. Controller and Auditor General of India, it is Article 148. Finance Commission 280. Administrative Tribunal, Article 323A. And UPSC is which is Article 315. Okay. So see, remembering article is like very difficult. If you are going to read directly Constitution and trying to memorize these articles, it's like very difficult to remember. So it's like you can do that also, but I will suggest you, if you see these questions, so you're going to memorize 4 articles. So the best way of memorizing articles, just to go through the questions. Okay, if you made mistake in the questions, those articles you will remember for longer times. Okay, so whenever you are doing test series, even if you don't know the answer, just take any answer. Okay, you make wrong answer, and when you are going to correct that, I mean when you are going to see the answer, you will see, okay, I have made mistake here. Okay, so that time you will see the correct option. So for that question, you're not going to forget anyway. See, I will give you an example of myself. I think in the last video also I have told that once I was giving one of the PSC exam. So there they have asked money bill. Like simply they have asked like what is the article of money bill. See, I know everything about money bill. Okay, we minister will present, and it has to be present in Lok Sabha, Rajya Sabha में नहीं उसको present किया जाता है, ठीक है. But I was confused with whether it is article 108 or 109, 110 उस समय, ठीक है. I think मैंने 109 करके आया था एग्जाम में. फिर जब मैं आया घर पे मिलाया तो देखा 110, ठीक है. मनी बिल 110 होता है.
ठीक है, आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, you most of people know that okay this article 110 is the moneyable, बट कई बार ऐसा होता, मैं पढ़ा भी होऊंगा, ऐसा नहीं कि जब मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ तो मैंने देखा होगा, बट उस समय आई वाज कंफ्यूज लाइक whether it is 109 या 110. अब मैं उस समय मिस्टेक कर दिया कि 110 होता है, बट मैंने 109 मार के आया. अब क्या है कि पूरी लाइफ 110 मुझे भूलेगा नहीं. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट 110 इज द मनीबल. तो इस तरीके से this is like my lesson. Okay, I have learned from this. So try to avoid mistake in the main exam. मेन एग्जाम में जाने से पहले आप जितने भी मिस्टेक करना है टेस्ट सीरीज वगैरह में कर लो. जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हो तो 150 क्वेश्चन है, पूरे करो. जैसे यूपीएससी वाले हैं तो 100 हैं तो सारे करो, भले ही गलत होता है. ओके, what happened when you made mistake and the similar type of mistake you are not going to do in the main exam. ओके, सो इतना मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आर्टिकल वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रिमेंबर करना. सो व्हाइल यू आर डूइंग द टेस्ट, do the mistake even if you don't attempt the question, see the answer in the last. Okay, that time, okay, you will think, okay, I have made mistake here, this is the article for this. Okay, next time I'm not going to make the same mistake. Okay, so I hope like what I'm trying to say that. So कहने का मतलब ये कि आप टेस्ट सीरीज में मिस्टेक कर लो, मेन एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना. और आर्टिकल्स को याद करने का अच्छा तरीका, क्वेश्चंस को करो, क्वेश्चन से भी याद होता है अच्छा खासा, क्योंकि 350 से ऊपर आर्टिकल है. सारा तो ऐसा बुक में एक बार बैठ के आप याद तो नहीं कर सकते हो. ओके, एनीवे, ठीक है, इसका आंसर ए होगा. फाइन. क्वेश्चन, which one of the following pair is not correctly matched. अब देखिए इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है. अब देखिए, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए और ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है. एक आर्टिकल को छोड़ के इंटर-स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यूपीएससी, हम लोगों ने 3 ऑलरेडी देखा हुआ है. वहां पे सिर्फ एक डिफरेंट होगा, विच इज इंटर-स्टेट काउंसिल. ओके, सो 263, 280, 323, 315. अब आराम से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक, तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा उस टाइम पे ये 2020 में आया था यूपीपीसीएस में. इसका आंसर थोड़ा सा आई मीन कंफ्यूजिंग. आई विल सी द ऑप्शंस. लाइक देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल 263 होता है, फाइनेंस कमीशन 280 होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A होता है, यूपीएससी 315 होता है. इसमें चारों ही ऑप्शन सही है. ठीक है, तो इस वजह से आई मीन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल था. तो लेकिन आप जो मेन क्वेश्चन पाओगे वहां पे आपको करेक्ट मिलेगा. देखिए यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, यूपीपीएससी हैज गिवन द आंसर सी. ओके, देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज वर्थ टू एक्सक्लूड फ्रॉम द इवैल्यूएशन. ठीक है, अब उस समय जब ये क्वेश्चन आया था ये चारों ही सही हैं, बट इन्होंने ऑप्शन सी को बोला था करेक्ट है, बट ये चूंकि सारे ही सही हैं तो they have not evaluated. Okay, so this question, but the thing is that like जैसे मान लो यहाँ पे इंटर-स्टेट काउंसिल को बोल देता 260, तो हमारा नॉट करेक्ट में ए ऑप्शन हो जाता, बट यहाँ पे चारों ही सही है. So we'll skip this question. Okay, but the thing is that we have to remember this all the four. Inter-state council is 263, finance commission is 280, administrative tribunal is article 323A, UPSC is article 350. ओके, देखिए करने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या उसमें दिया है. ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा हमें पता रहता है और कई बार क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है. ओके, आप मान के चलो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से 40% तो क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आप लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन करते. स्टैटिक पार्ट की बात कर रहा हूँ, करेंट अफेयर तो नहीं. ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में तो आ ही जाता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू these previous year questions. Okay, maybe after 3-4 months or maybe 6 months, I will upload entire UPSC previous year question from all the subject, including CSET
also for state PSC last 30-year question, including CSAT. Okay. UPSC I'm doing I think last 40-year question. I have started from 1979. So you will not find any I think playlist in YouTube where they have done the last 40-year questions. Okay, and I'm doing year wise. Okay, so please watch that UPSC questions as well. Okay, so next question, which of the following is correctly match? Okay, इसमें correct पूछ रहे कौन सा match हो रहा है? Article 17, Article 78, Article 192, Article 352. Equality before law, establishments of parliament, salaries and allowance of parliament members, proclamation of emergency. ठीक है, देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट है आर्टिकल 17 से करेक्टली मैच पूछ रहा है. तो इसमें जो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मैच करेक्टली. अब देखिए जो हमारा डी है वो सही है. 352 ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस इज द करेक्ट वन. ओके, you can just see explanation here. I'm not going to read. Okay, so these three are wrong, they are not correctly matched. Okay, so the answer is D. Okay, next question again, articles of the constitution provision. ठीक है, 215, 222, 226, 227, transfer of judge from one high court to another, power of superintendence over the court by high court. अब देखिए जुडिशरी का जितने भी आर्टिकल होता है उसको एक ही बार पूछ लीजिए इसमें. पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ओके, देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, हमें पक्का पता होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए ऐसे ही वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट याद करने जाओगे तो डिफिकल्ट होगा. ऐसे वाले क्वेश्चन आप यहीं से याद करो कि इसका ये होता है, इसका ये होता है. ठीक है, अब देखिए इसमें जो 215 होता है, दिस इज फॉर हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फोर्थ होता है. ठीक है, 222 होता है ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. ठीक है, 226 जो होता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, ये पता है हमें. ठीक है, और आर्टिकल 32 होता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स. ओके, बचा हमारा लास्ट वाला 227 पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट. ठीक है, अब इस तरीके से आप अगर मैच कराओगे यू विल गेट आंसर ए. ठीक है, यहाँ पे सेम चीज ही लिखा हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू रीड अगेन, यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए अब पिछले वाले से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्प कर सकता है. एनीवे विल सी दैट अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज. ओके, आर्टिकल 240, आर्टिकल 241, आर्टिकल 242, आर्टिकल 239. ठीक है, मतलब कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे हाई कोर्ट होना चाहिए. सो इट इज एक्चुअली बी विच इज आर्टिकल 241. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 241 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट for union territory or declare any court in any such territory to be high court of all in all or any of purpose of this constitution. ठीक है, so answer is B. जैसे मतलब किसी दूसरी इवन स्टेट के या यूनियन टेरिटरी को बोल सकता है, okay, you will be this high court will be the high court for this union territory as well. For example, like for the Chandigarh is common capital for, you can say that, Punjab and Haryana, so they have common high court. Okay, so the answer is B. Next,
In which article of the Constitution the adult suffrage is recognized? Okay. Article 324, Article 325, 326, 327. अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही आर्टिकल 326 होता है, ठीक है, मतलब वोट डालने की जो राइट होती है उसके बारे में बोल रहा है. आर्टिकल 326, इलेक्शन टू बी द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज. मतलब जो लोग 18 या 18 के ऊपर है वो दे कैन वोट. ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है, आई मीन फॉर द लोकसभा एंड फॉर द स्टेट असेंबलीज. ओके, नेक्स्ट अगेन दिस इज मैच लिस्ट 76, 148, 75, 331, 131 sorry. Again, Controller and Auditor General, jurisdiction of Supreme Court, Attorney General of India, appointment of Union Ministers. ठीक है, I think you can answer. अगर आपको थोड़ा सा राष्ट्रपति के पावर्स के बारे में पता है, उनका आर्टिकल पता है, so you can answer this question. Okay, देखिए नहीं भी पता फिर भी हम लोग करेंगे इसको. आर्टिकल 76, this is Attorney General of India. 148 हम लोगों ने देखा था कैग, ठीक है. आर्टिकल 75 1 अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. मतलब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब जो हमारा जनरल इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें 75 1 में बोलता है कि president will appoint to the prime minister and then prime minister will advise to the president. Okay, these will be the council of minister, union minister, so they will be the union minister, then president will appoint to them. वही चीज में बोला appointment of ministers. Okay, then article 131, jurisdiction of Supreme Court. Fine. So based on this, answer will be B. Okay, देखिए UPPCS का क्वेश्चन है. Fine. So this is like 87th question. Answer B. You can read from here. Same thing is written here, so I'm not going to read. You can just pause the video and read this again. Again, match list. I think this is based on DPSP, from the DPSP. Okay, 42, 45, 14, including fundamental rights. 41. So equality before law, right to work, just and human condition of work, free and compulsory education for children. देखिए इसमें फिर से थोड़ा सा डाउटफुल था, तो इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया है, ठीक है. आई डोंट नो वेदर दे हैव इवैल्यूएटेड और नॉट, बट स्टिल विल सी दैट. देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ इज आर्टिकल 14, राइट टू वर्क इज आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन इज 41, एंड प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये आर्टिकल, एंड द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिफोर बिलो द एज ऑफ 6 years. ठीक है, 45. So provision of free and compulsory education for the children was originally mentioned in article 45. ठीक है. So इस वजह से इसके हिसाब से इसमें कोई सा भी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो मैच नहीं कर रहा था. So I have no idea whether they have evaluated or not, but as of now you just remember the article, just forget about what is the answer of the question. Okay, we need to know what are the articles is given in this question. ठीक है, हमारे एग्जाम में जो आएगा वो दैट विल बी द करेक्ट क्वेश्चन, विल लैंड विद सम ऑफ द ऑप्शन, बट हियर वी डोंट नो व्हिच वन, नो वन इज मैचिंग हियर. ओके, जस्ट विल रीड हियर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002 it has been included as the fundamental rights in Article 21A, and in the Article 45 it has been replaced by provision for early childhood care and education to the children before the age of
6 years. ठीक है. So yeah, so I mean no option is matching here. Okay. Next question, क्या करना है इसमें? Correctly match. So part 2 of Constitution, part 3 of Constitution, part 4A of Constitution, part 5 of Constitution, fundamental rights, citizenship, fundamental duties, DPSP. Okay, ठीक है. I think this is the simplest question. इसमें देखिए correctly match हमारा this is the part 4A fundamental duties. Okay, this is the correct answer. ठीक है. देखिए part 2 ये fundamental right part 3 में दिया हुआ, citizenship part 2 में दिया हुआ, DPSP part 4 में दिया हुआ. So that's why the answer is C. Okay, so part 2 is citizenship, part 3 is fundamental right, part 4 is DPSP. So this will be the only option which is left, which is correct. So the answer is C. Fine. Okay, not correctly match. Now they are asking not correctly match. Okay, fundamental right article, abolition of untouchability, article 17, protection against arrest and detention, article 23, freedom of religion, article 25, protection of interest of minorities, article 29. ठीक है. अब आपको कंठस्थ होना चाहिए फंडामेंटल राइट, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट. तो इसमें देखिए हमारा जो इसमें पहला सही है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 पता है हमें, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29, दिस इज आल्सो करेक्ट. ओनली दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, दिस इज रॉन्ग. ओके, ये हमारा गलत है. सो आंसर बी हो जाएगा. ठीक है. ये एक्चुअली में 22 होता है, 23 नहीं होता है. आप यहाँ पे देखिए 22 होता है. So that's why the answer is B. They are asking not correctly match.